Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Hindi PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. आज मेरे घर आई थी मेरी बहन साक्षी। वो पिछले हफ्ते एक परीक्षा देने के लिए दिल्ली से प्रयागराज गई थी और दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए उसने वंदे भारत ट्रेन में यात्रा की। उसने मुझे अपने अनुभव के बारे में बताया। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी पॉड 101 में। वेलकम टू आवर चैनल हिंदी पॉड 101। नमस्ते, मेरा नाम है आकांक्षा। हाय, माय नेम इज आकांक्षा। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ साक्षी के दिल्ली से प्रयागराज के सफर के ट्रेन का अनुभव। Pay close attention to the words and phrases we are going to use. I will be asking you questions afterward. Listen carefully. साक्षी दिल्ली से है और उसे जाना था प्रयागराज एक परीक्षा के लिए, जिसके लिए उसने वंदे भारत ट्रेन से यात्रा की। उसकी ट्रेन का समय सुबह 6 बजे का था, इसलिए वह 4 बजे उठकर तैयार हुई और 5 बजे निकली रेलवे स्टेशन जाने के लिए। उसको पापा ने अपनी गाड़ी से रेलवे स्टेशन तक छोड़ा। वह करीब आधा घंटे में रेलवे स्टेशन पहुंच गई। रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह व्यस्त और भीड़-भाड़ वाला था। टिकट खिड़की पर बहुत ही लंबी लाइन थी। किसी भी असुविधा से बचने के लिए साक्षी ने टिकट पहले ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक करा ली थी। ट्रेन एकदम सही समय पर रेलवे स्टेशन पर आ गई थी। साक्षी की सीट खिड़की के पास वाली थी, जो कि उसकी पसंदीदा जगह है। ट्रेन 83 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति और अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। वंदे भारत ट्रेन वाकई में तेज और सुगम है। साक्षी ने रास्ते में इमारतों, खेतों और पहाड़ों को गुजरते हुए देखा और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। उसने कुछ देर के लिए किताब खोली और परीक्षा के महत्वपूर्ण पाठ को दोबारा पढ़ा। जब उसने प्रयागराज आने की घोषणा सुनी, तो उसने अपनी किताब दूर रखी और ट्रेन छोड़ने की तैयारी करने लगी। वह परीक्षा के लिए तैयार होकर प्रयागराज स्टेशन पर उतर गई। साक्षी को ट्रेन में यात्रा कर बहुत अच्छा लगा और उसे जरा भी थकान नहीं हुई। वंदे भारत ट्रेन बहुत ही आरामदायक है। That's all about taking a train in India. Now let's see how much you have understood. I have a few questions for you. First question is, what was the name of the train Sakshi travelled in? A. Delhi Prayagraj Express. B. Vande Bharat. C. Prayagraj Express. Second is, how did Sakshi purchase the train tickets? A. At the train station itself. B. Through an agent. C. Booked online on IRCTC website. Third question, what is the maximum speed of Vande Bharat train? A. 83 km per hour. B. 160 km per hour. C. 200 km per hour. And the last question is, how was the train journey for Sakshi? A. Comfortable. B. Confusing. C. Tiring. Keep your answers in mind. We will tell you the correct answers by the end of the video. Now we will listen to the story again, but more slowly this time. साक्षी दिल्ली से है और उसे एक परीक्षा के लिए प्रयागराज जाना था, जिसके लिए उसने वंदे भारत ट्रेन से यात्रा की। उसकी ट्रेन का समय सुबह 6 बजे का था, इसलिए वह 4 बजे उठकर तैयार हुई और 5 बजे घर से निकली रेलवे स्टेशन जाने के लिए। उसको पापा ने अपनी गाड़ी से रेलवे स्टेशन छोड़ा। वह करीब आधा घंटे में घर से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन हमेशा की तरह व्यस्त और भीड़-भाड़ वाला था। टिकट खिड़की पर
बहुत लंबी लाइन थी। किसी भी असुविधा से बचने के लिए साक्षी ने पहले ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक कर ली थी। ट्रेन एकदम सही समय पर प्लेटफॉर्म पर आ गई। साक्षी की सीट खिड़की के पास वाली थी, जो कि उसकी पसंदीदा जगह है। ट्रेन 83 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति और अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। वंदे भारत ट्रेन वाकई में तेज और सुगम है। साक्षी ने रास्ते में इमारतों, खेतों और पहाड़ों को गुजरते हुए देखा और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। उसने कुछ देर के लिए किताब खोली और परीक्षा का महत्वपूर्ण पाठ भी दोबारा पढ़ा। जब उसने प्रयागराज के लिए घोषणा सुनी, तो उसने अपनी किताब दूर रखी और ट्रेन छोड़ने की तैयारी करने लगी। वह परीक्षा के लिए तैयार होकर प्रयागराज स्टेशन पर उतर गई। साक्षी को ट्रेन में यात्रा कर बहुत अच्छा लगा और उसे जरा भी थकान नहीं हुई। वंदे भारत ट्रेन बेहद आरामदायक है। Let's go over the story in more detail now and translate it for your understanding. Let's see how well you comprehend it by yourself. साक्षी दिल्ली से है और उसे एक परीक्षा के लिए जाना था प्रयागराज, जिसके लिए उसने वंदे भारत ट्रेन से यात्रा की। Sakshi is from Delhi and she had to go to Prayagraj for an exam for which she travelled by Vande Bharat train. Let's start with the meaning of the word pariksha we used in this sentence. Pariksha means exam. Pariksha, pariksha, pariksha. The word yatra here means travel. Yatra, yatra, yatra. In this sentence, we also use the word jana, which means to go. Jana, jana, jana. We here use the past tense of the verb jana for had to go, which translates to jana tha. In Hindi, we mostly add or suffix the word tha along with the verb to denote the action have been done in the past. Regarding the Vande Bharat train, which is also known as Train 18, is a high-speed modern train in India. It was designed and built in India, offering passenger a fast and comfortable travel. उसकी ट्रेन का समय सुबह 6 बजे का था. Her train timing was 6 o'clock in the morning. The word subah here means morning. Subah, subah, subah. And the word samay here means time. Samay, samay, samay. The number 6 is called छः in Hindi. छः, छः, छः. One important thing to learn about time in Hindi is that we use the word baje for o'clock in English. Like 1 o'clock is called ek baje. 2 o'clock is called do baje. So on and so forth. इसलिए वह 4 बजे उठकर तैयार हुई और 5 बजे घर से निकली रेलवे स्टेशन जाने के लिए. So she got up at 4 o'clock, got ready and left home at 5 o'clock to go to the railway station. The new vocabulary words here are uthna means get up. Uthna, uthna, uthna. तैयार होना
means get ready. तैयार होना, तैयार होना, तैयार होना. And घर से निकलना means left home. घर से निकलना, घर से निकलना, घर से निकलना. Also, 4 is called चार in Hindi. चार, चार, चार. And 5 is called पाँच in Hindi. पाँच, पाँच, पाँच. Have you noticed that we said 4 बजे for 4 o'clock and 5 बजे for 5 o'clock like we learned. उसको पापा ने अपनी गाड़ी से रेलवे स्टेशन तक छोड़ा. पापा dropped her in his car at the railway station. The word गाड़ी is the general Hindi word used for vehicle. गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी. In Hindi, we use the word गाड़ी more for cars than the other vehicle in general. Also, the word apni used here is a pronoun used for his. Apni, apni, अपनी. वह करीब आधा घंटे में घर से रेलवे स्टेशन पहुंच गई. She reached the railway station from home in about half an hour. The word घर here means home. घर, घर, घर. The word आधा here means half. आधा, आधा, आधा. And the word घंटा here means hour. घंटा, घंटा, घंटा. The word करीब used here literally means near, but is also used for about to or nearly in Hindi conversations. करीब, करीब, करीब. The word पहुंचना here means to reach. पहुंचना, पहुंचना, पहुंचना. Station हमेशा की तरह व्यस्त और भीड़-भाड़ वाला था. The station was busy and crowded as always. So the new words to learn here are व्यस्त, which means busy. व्यस्त, व्यस्त, व्यस्त. Another word is भीड़-भाड़, which means crowded. भीड़-भाड़, भीड़-भाड़, भीड़-भाड़. And the last word is हमेशा, which means always. हमेशा, हमेशा, हमेशा. टिकट खिड़की पर बहुत लंबी लाइन थी. There was a very long queue at the ticket window. खिड़की is the word used for window in Hindi. खिड़की, खिड़की, खिड़की. The word queue is called line or कतार in Hindi. Line, line, line. कतार, कतार, कतार. The word लंबी is called long. लंबी, लंबी, लंबी. The word बहुत means very. बहुत, बहुत, बहुत. Next sentence is किसी भी असुविधा से बचने के लिए साक्षी ने पहले ही IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करा ली थी. To avoid any inconvenience, Sakshi has already booked the train tickets online from IRCTC website. The first word used here is asuvidha, which means inconvenience. Asuvidha, asubidha, asubidha. The word bachna is here used for to avoid. Bachna, bachna, bachna. One thing we mention here is IRCTC website. IRCTC stands for Indian Railway
Catering and Tourism Corporation. It is an online platform which helps passengers with various services related to Indian Railways. From booking tickets to checking schedules and ordering food, it offers a range of services to ensure a smooth travel experience. ट्रेन एकदम सही समय पर प्लेटफॉर्म पर आ गई थी. The train arrived at the platform exactly on time. In Hindi, we say एकदम सही for exactly. एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही. The verb आ गई means to arrive. आ गई, आ गई, आ गई. साक्षी की सीट खिड़की के पास वाली थी, जो कि उसकी पसंदीदा जगह है. Sakshi's seat was near the window, which is her favorite place. The word pass used here means near. Pass, pass, pass. And the word pasandida means favorite. Pasandida, pasandida, pasandida. The word jagah means place. Jagah, jagah, जगह. ट्रेन 83 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति और अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही. The train was running at an average speed of 83 km per hour and a maximum speed of 160 km per hour. There are so many new words to learn in this sentence here. Let's start with the word औसत, which means average. औसत, औसत, औसत. Next word is gati, which means speed. Gati, gati, gati. Another word is adhiktam, which means maximum. Adhiktam, adhiktam, adhiktam. The new number to learn in Hindi here is tirasi, which means 83. Tirasi, tirasi, tirasi. And another number to learn here is 160, which means 160. 160, 160, 160. वंदे भारत ट्रेन वाकई में तेज और सुगम है. The Vande Bharat train is really fast and smooth. There are two new adjectives to learn here. First is tez, which means fast. Tez, tez, tez. Another is sugam, which means smooth. Sugam, sugam, sugam. There is another word to learn here, which is wakai, which means really. Wakai, wakai, वाकई. साक्षी ने रास्ते में इमारतों, खेतों और पहाड़ों को गुजरते हुए देखा और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया. साक्षी passed buildings, fields and mountains on the way and enjoyed the natural scenery. The new word to learn here is imarat, which means building. Imarat, imarat, imarat. Next word is khet, which means field. Khet, khet, khet. Next word is pahar, which means mountain. Pahar, pahar, pahar. Another word is prakritik drashya, which means natural scenery. Prakritik drashya, prakritik drishya, prakritik drishya. Here the word prakritik means natural and drishya means scenery. So combining them in conjunction, they are called
प्राकृतिक दृश्य, which is natural scenery. Another new word here is Anand, which means to enjoy. Anand, Anand, Anand. And lastly, there is a verb to learn here, is guzarna, which means to pass. Guzarna, guzarna, guzarna. उसने कुछ देर के लिए किताब खोली और परीक्षा का महत्वपूर्ण पाठ दोबारा पढ़ा. She opened the book for some time and reread the important lesson of exam again. A lot of word to learn here again. First is kitab, which means book. Kitab, kitab, kitab. Next is महत्वपूर्ण, which means important. महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण. Next is part, which means lesson. Part, part, part. Another word is dobara, which means again. Dobara, dobara, dobara. There are two more verbs to learn here, which is kholna and padna. Kholna means to open. Kholna, kholna, kholna. And padna means to read. Padna, padna, padna. जब उसने प्रयागराज के लिए घोषणा सुनी तो उसने अपनी किताब दूर रखी और ट्रेन छोड़ने की तैयारी करने लगी. When she heard the announcement for Prayagraj, she kept her book away and started preparing to leave the train. The new word to learn here is ghoshna, which means announcement. Ghoshna, ghoshna, ghoshna. Next word is dur, which means away. Dur, dur, dur. If you have noticed, we use the word tayyari here again. In this sentence, the word tayyari या तैयार करना is used for the verb to prepare. तैयार करना, तैयार करना, तैयार करना. There is one more verb to learn here, which is sunna, which means to hear. Sunna, sunna, sunna. Moving on, वह परीक्षा के लिए तैयार होकर प्रयागराज स्टेशन पर उतर गई. She got down at the Prayagraj station getting ready for the exam. There is only one new word to learn here, which is utarna, which means to get down. Utarna, utarna, utarna. साक्षी को ट्रेन में यात्रा कर बहुत अच्छा लगा और उसे जरा भी थकान नहीं हुई. Sakshi enjoyed traveling by train and did not feel tired at all. Again, there are two words to learn here. First is अच्छा लगना, which means to enjoy. अच्छा लगना, अच्छा लगना, अच्छा लगना. Another is थकान, which means tired. थकान, थकान, थकान. वंदे भारत ट्रेन बेहद आरामदायक है. Vande Bharat train is very comfortable. The new word to learn here is Aramdayak, which means comfortable. Aramdayak, Aramdayak, Aramdayak. So that was all about taking a train in India we learned. Now that you know the key phrases and vocabulary in the story I told you, let's get back to the quiz questions. I hope you got all the answers correct by now. The first question was, what was the name of the train Sakshi travelled in? The answer of which is option B, Vande Bharat. Next question was, how did Sakshi purchase the train tickets?
The correct answer to which is option C, booked online on IRCTC website. The next question was, what is the maximum speed of Vande Bharat train? The correct answer to which is option B, 160 km per hour. 160 km प्रति घंटा. The last question was, how was the train journey for Sakshi? The correct answer to this is option A, comfortable, आरामदायक. How many of your answers were correct? I hope all of them to be correct. Now let us review all the new Hindi words we learned in this video. परीक्षा, जाना, यात्रा, समय, सुबह, 6 बजे, उठना, तैयार होना, निकलना, 4 5 गाड़ी, अपनी, घर, आधा, घंटा, करीब, पहुंचना, व्यस्त, भीड़-भाड़, हमेशा, खिड़की, लंबी, लंबा, लाइन, कतार, बहुत, असुविधा, बचना, एकदम सही, आ गई, पास, पसंदीदा, जगह, औसत, गति, अधिकतम, 83, 160, तेज, सुगम, वाकई, इमारत, खेत, पहाड़, प्राकृतिक दृश्य, आनंद, गुजरना, किताब, महत्वपूर्ण, पाठ, दोबारा, खोलना, पढ़ना, घोषणा, दूर, सुनना, उतरना, अच्छा लगना, थकान, आरामदायक. Great job sticking with us through the video. So you have learned plenty of new Hindi words today. These are going to help you while taking a train in India, and you will be able to converse more in Hindi. There was a lot you have learned about the train journey in India, and also you have learned the knickknacks of Indian Railways as well. Do tell us, what was your favorite part? What surprised you the most? Remember to comment below, and don't forget to like, share and subscribe the video for more great content like this. And if you want to be able to have real Hindi conversations with native speakers, just click the link in the description and download our PDF lessons, including all the essential phrases you will need in everyday life. Alvida! Bye-bye! Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets.